Okay, so today we'll be discussing about the forms and cross sections of the fever. Okay. In this regard, we have studied what the different kinds of classification of fevers available, how the collection is done, and all. Now we'll be moving to the next section, that is forms and cross sections of fever. Okay. So we discussed earlier also that the shape of the fever, it can be broadly classified into two categories. What are those two categories? One is circular fever, other is non-circular fever. Okay. So why do we do this particular classification? Because circular fevers are mostly used fevers. Okay. अगर combined feverage नहीं है हमारा, तो सबसे best fever जो available है हमारे पास, वो कौन सा है? That is circular fever. Okay. Then apart from, if the fever is not circular, obviously it will be non-circular. Okay. So all the other fevers, they are classified in non-circular fevers. Okay. So the examples of following the shapes available are triangular, rectangular, then trapezoidal can be there. Trapezoidal is mostly kept in open trays. Okay. Then parabolic, then U-shape, semi-elliptical, standard X-shape, modified X-shape, and basket handle section. So one by one, we'll be discussing all of these, and we'll be having a look at images also, so that the cross section will be cleared most. Okay. So yesterday सर आपकी also आवाज yes. अब डिस्टॉर्ट हो रही है. Yeah. Just a minute. Now it is clear. Is it clear हल्की सी now? हो गई सर, अब भी हो रही है लेकिन अब थोड़ी ठीक है. Okay. Might be the internet problem. Okay. So this yesterday also we had a discussion on standard X-shaped fever and modified X-shaped fever. So what was the difference between both? It is clearly evident from the diagram itself. The difference is in the bottom dia. In modified X-shape, the dia of the same bottom of the fever gets reduced, or you can say we reduce the the dia of the same bottom of the fever. Okay. So dia कितना reduction होता है? It is just half of the standard X-shaped the dia of the bottom of standard X-shaped fever. Okay. So in that case, what will happen? Yesterday we had a discussion on this. Anybody who can point out that what is the advantage of having this modified X-shaped fever and standard X-shaped fever? इसमें वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है नीचे वाले रिसीवर में. Exactly. Okay. In the dry weather flow conditions, what happens if we have to maintain the self-cleansing velocity at a very minimum discharge? Okay. ड्राई वेदर फ्लो में भी ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर हाउस होल्ड से किसी कॉलोनी से डिस्चार्ज बहुत कम होता है. सर्टेन कॉलोनी इज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाउसेस, द एरिया इज व्हाट यू कैन से स्पेशली पॉपुलेटेड. ठीक है. एट द सेम टाइम वन एरिया इज डेंसली पॉपुलेटेड, वहां पे क्या होगा? द डिस्चार्ज जनरेटेड एस्टिमेटेड डिस्चार्ज विल बी क्वाइट मोर. ओके. सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, वही सेम चीज होगी कि यू हैव टू हैंडल द एंटायर सीवरेज. Anyhow you have to take care of the estimated sewage. Okay. So for that, what you can do, instead of providing circular, whenever there is a combined sewer, so you can provide standard X shape or modified X shape depending upon the estimated discharge. Okay. So अगर estimated discharge तुम्हारा कम है तो कौन सा adopt करोगे? Standard X shape या modified X shape? स्टैंडर्ड. नहीं Everybody is going with standard. नहीं सर, मॉडिफाइड. Yes, Rahul is there. यस सर स्टैंडर्ड करेंगे. Okay. Priya, what is your take on this? Standard maybe. Maybe डिस्चार्ज कम है. already दो तो ऑप्शन दिए उसमें, तो maybe बोलोगे तो how it will work. But see, मैं listen to the पूछ रही question थी again. कि क्वेश्चन क्या था. Yeah, listen to the question again. If you have to carry less discharge in a combined sewage system, so what you will adopt? Standard X shape or modified X shape? स्टैंडर्ड. सर मॉडिफाइड करेंगे. Yeah, that's what I was about to ask. Anybody who will go with modified X shape and why? सर कंबाइंड सीवेज है ना, कंबाइंड में फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सीवेज की वेलोसिटी कम ज्यादा हो सकती है. तो वो तो स्टैंडर्ड X शेप में भी हो सकती है. अगेन यू आर प्रोवाइडिंग दिस पर्टिकुलर शेप.
रिमेंबर बट यस्टरडे कंबाइंड है ना, डायग्राम कंबाइंड के लिए आपने कल ही बताया था कि मॉडिफाइड यूज करते हैं. आई टोल्ड यू कंबाइन के लिए एग शेप सीवर यूज करते हैं. सर्कुलर सीवर इज यूज फॉर सेपरेट सीवरेज सिस्टम. दोनों ही स्टैंडर्ड एग शेप और मॉडिफाइड एग शेप दोनों ही हम यूज कर सकते हैं कंबाइंड सीवरेज के लिए. ठीक है, लेकिन इन दोनों में भी इट इज डिपेंडेंट अपॉन एस्टिमेशन ऑफ द डिस्चार्ज. अभी अभी बताया था. ठीक है, अगर एस्टिमेटेड डिस्चार्ज कम है, ठीक, इन केस ऑफ कंबाइंड सीवरेज ऑल्सो, तब हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी गोइंग विद मॉडिफाइड एग शेप. लेट्स से एग्जांपल की तरह कंसिडर कर लो. ठीक है, दो कॉलोनीज है, कॉलोनी ए एंड कॉलोनी बी. ठीक है, कॉलोनी ए का डिस्चार्ज ज्यादा है, कॉलोनी बी का डिस्चार्ज कम है. तुम्हें दोनों में कंबाइंड सीवेज सिस्टम ही अडॉप्ट करना है. ठीक, आप डिसाइड करोगे तो कैसे करोगे. The question is clear to everyone, na? Again, listen to me again. There are two colonies, colony A and colony B. A colony का जो estimated सीवेज डिस्चार्ज है वो तुम्हारा ज्यादा है, इट इज हायर. ठीक, और जो कॉलोनी बी है उसका एस्टिमेटेड सीवेज डिस्चार्ज कम है. दोनों ही कॉलोनीज में तुम्हें अडॉप्ट करना है कंबाइंड सीवेज सिस्टम. ठीक है, नाउ विच वन विल यू गो फॉर कॉलोनी ए एंड विच वन विल बी कॉलोनी फॉर कॉलोनी बी. सर मॉडिफाइड यूज करेंगे जहाँ का डिस्चार्ज कम है. ठीक है, दैट इज कॉलोनी बी. ओके, यस सर. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर विद दिस एग्जांपल. ये चीज क्लियर है ना सबको. एनीबडी जिसको ये Yes, क्लियर sir. नहीं है, काइंडली आस्क वंस अगेन, बिकॉज when you will be designing these sievers you will be having a problem regarding these only. ठीक है, इन्हीं कॉन्सेप्ट सर पे फिर से बेस्ड बता. डिजाइन है. हाँ इससे बताएं. सर फिर से बता दीजिए. ठीक है, ठीक है. डोंट कंसिडर दिस थिंग कॉलोनीज, कंसिडर कॉलेजेस. ठीक, एक तुम्हारा कॉलेज है, एक शारदा यूनिवर्सिटी है. कंपैरेटिवली शारदा इज यूनिवर्सिटी. ठीक है, तो दोनों जगह से सीवेज डिस्चार्ज जनरेट होगा. यस और नो, जनरेट होगा. ठीक, यस सर. तो तुम्हारे कॉलेज से जो सीवेज डिस्चार्ज जनरेट होगा वो क्या होगा, कम या ज्यादा एज कम्पेयर टू शारदा यूनिवर्सिटी. कम होगा. कम होगा. तो जिसमें डिस्चार्ज कम होगा, दोनों ही केसेस में हम लोगों को कंबाइंड सीवेज अडॉप्ट करना है. ठीक, तो अब इनमें से कौन सा सीवेज हम किस में इंप्लाई करेंगे, दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द एस्टिमेटेड डिस्चार्ज. जिसमें कम डिस्चार्ज होगा दैट इज तुम्हारा कॉलेज. तो व्हाट यू विल डू इन योर कॉलेज, यू विल बी प्रोवाइडिंग मॉडिफाइड एग शेप. व्हाई मॉडिफाइड एग शेप? अब आता है लॉजिकल क्वेश्चन कि व्हाई मॉडिफाइड एग शेप. ऐसा हमने क्यों किया कि कम वाले को मॉडिफाइड एग शेप प्रोवाइड कर रहे हैं और ज्यादा डिस्चार्ज को स्टैंडर्ड एग शेप. क्यों? क्योंकि डाया, जो बॉटम का डाया है वो स्टैंडर्ड एग शेप में ज्यादा है, मॉडिफाइड एग शेप में कम है. तो बॉटम का डाया अगर हम कम कर देंगे तो क्या होगा, वाटर लेवल कंपैरेटिवली राइज हो जाएगा मॉडिफाइड एग शेप में. ठीक है, तो अगर वही क्या नाम है, उसी डिस्चार्ज के लिए, ठीक, सेम डिस्चार्ज के लिए क्या होगा, स्टैंडर्ड एग शेप में तुम्हारा जो हाफ फुल कंडीशन है बॉटम पे वो मेंटेन रहेगी, स्टैंडर्ड में भी और मॉडिफाइड में. क्लियर? समझ में आ गया. यस सर. Okay. Now there was one more thing जो कल explain किया था, why these egg-shaped sievers are used instead of circular sieve in case of combined sieve. जब भी हम लोग combined sieve provide करते हैं, storm और ये drainage जब एक साथ देते हैं sanitary drainage, तो हम लोग circular sieve क्यों नहीं use करते, egg-shaped क्यों use करते हैं? ड्राई वेदर बता. ठीक है, so that is dry weather flow due to dry weather flow condition. क्या मतलब हुआ ड्राई वेदर फ्लो कंडीशन का, कि see, अगर यही चीज सर्कुलर प्रोवाइड करते तुम लोग, ठीक है, इफ दिस वाज सर्कुलर, दिस वाज केस ऑफ सर्कुलर सीवर, तो उसी सेम डिस्चार्ज के लिए लेट्स से हाफ फुल या 3/4 फुल कंडीशन में फ्लो कर रहा है. लेकिन जब पानी कम हो जाएगा, ड्राई वेदर फ्लो में पानी कम हो जाएगा, तो वो वाटर कहाँ आ जाएगा, हाफ फुल से नीचे यहाँ पे. अभी सिर्फ ऊपर वाले सर्कल को ही कंसिडर करो. ठीक है, जस्ट कंसिडर द अपर सर्कल. ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, अगर ड्राई वेदर फ्लो है तो ड्राई वेदर फ्लो की कंडीशन में क्या होगा, ड्राई वेदर फ्लो में जो वाटर लेवल है वो तुम्हारा यहाँ पे मेंटेन होगा, नीचे कहीं मेंटेन होगा, इन केस वेर यू आर यूजिंग एग शेप सीवर. ठीक, तो व्हाट विल हैपन, ये जो तुम्हारा अगेन दिस विल बी इन हाफ फुल कंडीशन. ठीक है, हाफ फुल कौन सा हो रहा है, ये वर्चुअल सर्कल जो छोटा वाला सर्कल है डी,
ओके लेकिन है क्या ये हाफ फुल है. तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, फायदा क्या हुआ इससे, जो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी है ये सब तुम्हारी मेंटेन रहेंगी. इट विल बी कंपैरेटिवली इजियर टू मेंटेन द वेलोसिटी. ओके ओके इज दैट क्लियर नाउ? हेलो एम आई ऑडिबल? यस सर. बेटा यस नो कुछ बोला करो ना. आई हैव टू टेक द रिस्पांस तभी आगे बढ़ूंगा. ओके देन दीज आर अदर शेप्स ऑफ सीवर जो कि कम यूज होते हैं. ठीक है इतने ज्यादा यूज नहीं होते बट बेस्ड अपॉन द डिस्चार्जेस व्हिच आर अवेलेबल, टाइप ऑफ डिस्चार्ज, हम लोग ये सारे सीवर की शेप भी यूज कर सकते हैं. बट usually 90% we go for the use of either circular sievers or H-shaped sievers. H-shaped sievers are a bit difficult to construct, but it is beneficial. Beneficial how? We don't have to provide two separate sievers. We can provide just one siever itself. Okay, this is one semi-elliptical shape which is placed in this way. Okay, then this is U shape. Both are quite similar to each other, but still there is a difference. Semi-elliptical mein the bottom is not flat, okay, but whereas in U shape the top surface is flat in nature. Okay, then again semicircular sieve is there. Then basket handle type. See, basket handle type is again a combination of what? Combination of U-shaped sieve and semicircular sieve. तो इसका combination करके जब हम construct करते हैं तो this is known as your basket handle type. This is also a prominent, prominently used type of sieve, basket handle type. ठीक, लेकिन बास्केट हैंडल टाइप में क्या डिसएडवांटेज है कि प्री कास्ट जो भी पाइप्स होते हैं वो हम लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है, इन साइट हम लोग ऑन साइट कंस्ट्रक्शन करके यूज भी कर सकते हैं. व्हाई? बिकॉज इट हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन इट कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एट ऑन साइट इजीली. ओके, तो इसीलिए हम लोग ये थोड़ा कम यूज करते हैं. प्लस देयर आर हाइड्रोलिक कंस्ट्रेंट एज वेल. ठीक, hydraulic parameters अगर इसके calculate करोगे तो it will be a bit difficult to calculate all those and therefore the design will be a bit difficult. Okay, so now let's talk about the advantages of circular cross section. ये हम लोगों को पता चल गया कि दो ही टाइप के सीवर्स हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, that is circular type and H-shaped sieve. Okay, so this circular section has certain disadvantages and advantages. Okay, so what are advantages? The first one is circular section has a perimeter, has least perimeter and maximum radius for given area. Therefore, it is hydraulically the most efficient. ठीक, क्यों है hydraulically most efficient? Why? Because it is having the least perimeter. ठीक, least perimeter है और maximum radius है. तो इसका क्या फायदा होगा? How it becomes most hydraulically most efficient? क्योंकि हाइड्रोलिक मीन रेडियस अगर तुम निकालोगे तो कैसे निकलता है? What is the formula for calculating hydraulic mean radius? It is a part of fluid mechanics itself. H by L. Sir, area to divided perimeter. Area upon perimeter. So since it is having least perimeter, तो hydraulic ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? Hydraulic mean radius will be maximized. ठीक है, और you can say increase. ठीक है, क्यों हो रहा है maximize area? क्योंकि perimeter तुम्हारा सबसे कम है. ठीक, then it requires minimum quantity of material for construction. So it proves economical too. किसी और में देखोगे, जैसे इससे पहले एग्जांपल देखा था तुमने बास्केट हैंडल का. ठीक है, देखो बास्केट हैंडल में कंपैरेटिवली मटेरियल क्या है रिक्वायर्ड ज्यादा. अगर सर्कुलर सेक्शन होगा तो दिस पोर्शन, see this portion will not be there in case of circular section. So therefore the saving of material will be done. और मटेरियल अगर बचेगा तो तुम्हारा क्या होगा? ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन के टाइम पे इट विल बी प्रूविंग इकोनॉमिकल ओनली. ओके, देन इट इज हैविंग यूनिफॉर्म कर्वेचर, तो पॉसिबिलिटी ऑफ डिपोजिशन भी कम हो जाता है. अगर बास्केट हैंडल के टाइप में देखोगे या रेक्टेंगुलर टाइप में देखोगे तो व्हाट विल हैपन? डिपोजिशन के चांसेस ज्यादा है. बट इन केस ऑफ सर्कुलर दो चीजें, एक तो कर्वेचर ज्यादा है प्लस यूनिफॉर्म कर्वेचर है, तो डिपोजिशन ऑफ दिस थिंग सॉलिड वेस्ट विल नॉट बी देयर. Also the last thing is they are easily manufactured. Since circular pipes हम लोग बहुत टाइम से मैन्युफैक्चर करते आ रहे हैं, there are
you know several industries which manufacture pipes. प्लस पाइप्स की जो कन्वेंशनल शेप है वो हम लोगों के दिमाग में यही है कि इट विल बी सर्कुलर, सो मैन्युफैक्चरिंग इज क्वाइट इजी फॉर सर्कुलर पाइप. देन डिसएडवांटेज हम लोग इससे पहले डिस्कस कर ही चुके हो, क्या कि कंबाइंड सीवरेज सिस्टम के टाइम पर अगर तुम सर्कुलर पाइप्स यूज करोगे तो सेल्फ क्लेंजिंग वेलोसिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी किस टाइम पे, ड्राई वेदर फ्लो कंडीशन पे. ठीक है, दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज एंड यू कैन से द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन सीवर. ठीक, इसीलिए हम लोग सर्कुलर क्रॉस सेक्शन सीवर्स को रिवाइज करके अडॉप्ट करते हैं एग शेप सीवर. Okay, now this egg shaped seaver, again this has advantage and disadvantages. What are the advantages? Hydraulically it is more efficient than the circular section. Why? Because जैसा डायग्राम में तुम लोगों ने देखा था कि it is basically a combination of both. What? Combination of two circular sievers. One is having larger diameter, one is smaller diameter. और उसमें भी जो एरिया यूटिलाइज हो रहा है वो हो रहा है कितना, तो सेमी सर्कुलर पोर्शन. ठीक है, पूरा सर्कुलर पोर्शन टॉप एरिया तो यूटिलाइज भी नहीं हो रहा, सिर्फ बॉटम यूटिलाइज हो रहा है, वो भी छोटे वाले. ठीक है, प्लस कर्वेचर बाकी का यूज होगा. तो इफ यू विल कैलकुलेट द थिंग what do you say, hydraulic mean radius of both and combine it, so you will be finding what, you will be finding ki hydraulically it is more efficient than the circular section. Okay, then it also maintains self cleansing velocity even in dry weather flow conditions, जो कि circular section का disadvantage है. तो circular section का disadvantage यहाँ clear हो गया, that is in egg shaped seaver. Now this will be having certain demerits also. What are those demerits? First, it will be difficult in construction. Second, it will be less stable and it will require more machinery. Why? First वाला तो बहुत easily clear है, क्यों? क्योंकि circular sievers is conventional pipes or you can say conventional sievers, तो बहुत easily construction हो जाता है. But in case of egg-shaped seaver, you have to combine two circular sievers in one go, and then you have to, you know, what you can say, trim the upper portion and lower portion of two circular sievers as well. Okay, but second part is these are less stable. Why these are less stable? Because when you place these particular sievers, ठीक है, इन सीवर पाइप्स को जब तुम प्लेस करते हो एक्सकेवेशन करके ग्राउंड में, तो उस टाइम पे सर्कुलर पाइप को होल्ड करना बहुत इजी है. ठीक, या फिर व्हाट यू कैन से सर्कुलर पाइप्स को प्लेस करना बहुत सिंपल है. बट एट द सेम टाइम एग शेप सीवर को प्लेस करना डिफिकल्ट है. क्यों? क्योंकि बॉटम का जो डाया है वो कम है, टॉप का डाया क्या है, ज्यादा है. तो उस वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी इश्यूज ऑब्वियसली आएंगे. तुम अगर एंकरेज भी लगाओगे तो बॉटम पे लगाओगे, टॉप सीवर का जो टॉप पोर्शन है वहां पे मटेरियल ज्यादा है, तो वेट भी ज्यादा होगा. वेट ज्यादा होगा तो क्या होगा, इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन एट आइदर ऑफ द साइड. ठीक है, ऑन आइदर ऑफ द साइड इट विल बी इंटेंडिंग टू फॉल डाउन. ठीक, तो in that case what happens, okay, why it is difficult, because of this particular shape. Okay, this is clear. Yes, I hope this is clear to everyone. Yes sir, yes sir. Okay. Yeah, now once the sievers are laid, the very important before, you know, making them operational is testing of sievers. Okay, it is very important to test the sievers before you know, the functioning starts. Why? Because you cannot afford any kind of leakages from the sewage. See, leakage from the sewage will prove hazardous to everyone. If there is a leakage in water supply pipes, it can be, you know, considered for one, although even it will result in losses only. But still, in case of water supply sewer, अगर एक बार को faulty construction हो भी गया तो you can easily, you know, take care of that. But in case sewer is constructed you know, with certain leakage or with certain what you can say, faults in it, failures in it, तो तब problem ज्यादा हो जाती है. Why? Because sewer obviously it causes hazards. ठीक है, will be causing diseases. The leakage will cause you know, several disease or several problems. Okay, so why therefore it is very important that before operation starts the sewer should be tested, and any kind of defect, if it is detected, these defects may be you know, removed or rectified. Now how these testing of sewers take place, there are 4 different methods to test these sewers which are laid. What are those methods? Water test, air test, smoke test and
test for obstruction. Okay, these are 4 basic tests which are always carried out. Okay? The first 3 you can go for either of the 3 tests. These are based on availability of certain materials for testing. Like one by one we'll be considering. Yeah, first one is water test. So this water test is carried out in sewer lines between 2 manholes. Like how this is carried out, कोई भी 2 एंड्स ले लो. फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर सीवर लाइन ले लो जिसमें 2 एंड्स तुमने कंसीडर कर लिए. ठीक, लेट्स से कि वो दोनों एंड्स के अलावा बीच में और कोई डिस्कनेक्शन नहीं. ठीक, तो हाउ दिस टेस्टिंग इज डन. हमेशा 2 एंड्स पे ही टेस्टिंग होती है जिसके बीच में कोई और डिस्कनेक्शन नहीं होना चाहिए. और अगर है भी डिस्कनेक्शन या कोई और मैनहोल भी है, बेसिकली 2 मैनहोल्स के बीच में ही टेस्टिंग होगी. ठीक, तो हाउ इट इज डन कि लोअर एंड को हम प्लग कर देते हैं. ठीक, प्लग इज अटैच और रबर प्लग इज कनेक्टेड इन द लोअर एंड. और हायर एंड पे हम लोग क्या करते हैं, विल बी इंड्यूसिंग वाटर इनटू इट. ओके, then the upper end is of the sewer is plugged with a connection to the funnel. That means एक पर्टिकुलर सीवर लिया, उसके 2 एंड्स को हमने कंसिडर किया. ठीक है, दोनों एक एंड को हमने कंप्लीटली, जो लोअर एंड होगा उसको हमने कंप्लीटली प्लग कर दिया. दैट मीन सील कर दिया. ठीक, और जो अपर एंड है वहां से हमने वाटर इंड्यूस करना स्टार्ट किया, उसको भी प्लग इन करके. इट शुड बी कंप्लीटली वाटर टाइट, कहीं से लीकेज नहीं होना चाहिए. ठीक, so with the help of this funnel we will be inducing water into it. ठीक, अगर उसमें वाटर तुमने इंड्यूस कर दिया and you can it is already plugged at the other end, so what will happen, after certain time the head will be constant. ठीक, you will be maintaining a certain head on the water in the sewer itself. ठीक, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल पाइप की तरह कंसिडर कर लो. एक पाइप को तुमने किसी भी वाटर सोर्स से या ओवरहेड टैंक से कनेक्ट कराया. ठीक है, और उस पाइप के आगे तुमने क्या किया, प्लग लगा दिया. तो क्या होगा, उस वहां से पानी जब आगे वो प्रोसीड नहीं कर रहा है, तो उस पाइप में पानी भरने के बाद एक पर्टिकुलर वाटर लेवल कांस्टेंट मेंटेन हो जाएगा ओवरहेड टैंक में. ठीक है, ये हमने पिछले इसमें हाइड्रोलिक्स में भी पढ़ा था. ठीक, तो देयर विल बी अ सर्टेन वाटर हेड मेंटेन. सो नाउ इफ द हेड ऑफ दैट वाटर टैंक इट वेरीज. ठीक, अगर वो वेरी करेगा, यहाँ पे वो वाटर टैंक का काम क्या कर रहा है, फनल कर रहा है. ठीक, तो इफ दैट हेड वेरीज, अगर फनल में जो वाटर हेड है या वाटर लेवल है वो वेरी करेगा, दैट मीन्स कम होगा, दैट मीन्स देयर इज अ लीकेज. ठीक, अगर वो वेरी नहीं कर रहे हैं तो देन द टेस्टिंग इज ओके एंड द सीवर इज गुड फॉर ओके फॉर ऑपरेशन पर्पस. ओके, नाउ देयर आर सर्टेन what you can say parameters which has to be controlled. Like in case of cast iron sewer, the head should be at 9 meters. तो water head maintain करना है वो 9 meter पे maintain करना है. Then the acceptable loss or head loss should not exceed 2 liters per centimeter of the length of the sewer. Okay. Now disadvantage of this particular test is कि इसको perform करने के लिए sufficient amount of water available हो. नहीं, बिकॉज वाटर सप्लाई पाइप एक बार को फिर भी तुम डाया कंसिडर करोगे तो कंपैरेटिवली छोटा होगा. लेकिन सीवर पाइप की अगर बात करोगे तो कंबाइंड सीवर दे रहे हो अगर, तो क्या होगा, द डाया विल बी क्वाइट लार्ज. और इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, तुम्हारे पास अगर उतना ज्यादा वाटर अवेलेबल नहीं है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो फॉर अदर टेस्ट. नाउ दिस अदर टेस्ट इज एयर टेस्ट. ठीक है, सो एयर टेस्ट हम कब करते हैं, बेसिकली एयर टेस्ट ज्यादा बेनिफिशियल होता है बिकॉज वाटर टेस्ट करने के लिए तुम्हारे पास एक तरीके से पानी वेस्ट भी होगा. ठीक, सो वी गो फॉर दिस एयर टेस्ट इफ द कंडीशंस आर फेवरेबल. तो इंस्टेड ऑफ इन एयर टेस्ट व्हाट वी डू, द प्रोसीजर इज सेम. 2 मैनहोल्स के बीच में टेस्टिंग होगी. ठीक है, लोअर एंड विल बी बोथ द एंड विल बी दिस थिंग, what it will be done, they will be plugged or sealed you can say. Okay, then the air will be pumped into the pipeline usually via hand pump or with a control valve. Okay, तो मैनोमीटर रीडिंग और कब तक करते हैं, जब तक मैनोमीटर रीडिंग 125 से 150 mm के बीच में नहीं बना है. फिर उस सेटअप को 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है टेम्परेचर स्टेबलाइजेशन के लिए. ठीक, एंड देयर it is observed you can say. Okay, after temperature stabilization it is observed that the pressure is reduced to exactly 100 mm on the manometer scale. ठीक, उसके बाद उसको सील करके तुम रख दोगे. then after certain time or you can say half an hour. ठीक है, मैक्सिमम हाफ एन आवर हम लोग कंसिडर करते हैं.
उसके बाद वी चेक फॉर द प्रेशर कि प्रेशर रिड्यूस कितना हुआ, ठीक है। अगर 100 mm से नीचे आ गया प्रेशर, देयरफॉर इट मींस कि देयर इज अ लीकेज इन द पाइप, ठीक। So basically all these tests are done to detect the leakage in the pipe system, ठीक। Then again there is another test instead of this thing, air test. Over here what you can do apart from air के साथ हम क्या कर सकते हैं, we can induce smoke also, ठीक। Now this smoke will obviously do what, जहाँ भी leakage होगा वहाँ से smoke will come out of the pipeline, ठीक। और smoke अगर आएगा तो the advantage is that if the smoke is visible to us, एडवांटेज इसका ये होगा कि स्मोक हम लोग को बहुत इजीली विजिबल होता है, तो इट विल क्विकली रिवील द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम, यू डोंट हैव टू फाइंड आउट। एयर टेस्ट और वाटर टेस्ट के केस में तुम्हें पता तो चल जाएगा कि लीकेज है, ठीक है, लेकिन कहाँ है लीकेज वो तुम्हें सर्च करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ स्मोक टेस्ट व्हाट हैपन, तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि लीकेज है कि नहीं है, और तुम्हें ये भी बहुत इजीली पता चल जाएगा कि वेयर द लीकेज इज, द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम विल बी इजीली आइडेंटिफाइड। Okay. So this was about the forms and cross sections of the sewage. Any doubt up till here?